वंदना, अभी आप वो वीडियो चलेगा, उसको वीडियो होने के बाद में फिर आपको बोलने का है। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। आप जी जी। सुनिए। बाई चांस कोई पॉइंट आप भूल भी गए होंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, है हाँ ना? जी। हाँ जी। हाँ जी। यस। यस, वी आर लाइव नाउ। नाउ यू कैन प्ले, एलिजाबेथ मैम। अब आप ऑन कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। Hello, friends, pyramid masters, and gods from all over the world. We have एलिजाबेथ मैम, सॉरी यार, मैंने आपको म्यूट कर दिया। मैं सोचा आप बात कर रहे हैं। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। एलिजाबेथ मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो, एलिजाबेथ मैम, आर यू देयर? these. Yes, sir. या I प्लीज। remember three of them या because I resonated most with them. फिर से चलाना है कि Explore, ठीक है? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके। experiment, and evolve. Okay. Can you share more about that? The first E is experimentation. The second E is experience. We'll discuss about these two E's. Everything is an experiment. You are going to sleep. The sleep is an experiment. And you will have an experience of sleep. You are doing meditation. It's an experiment. And you will have an experience in meditation. You mix acid and alkali. What will happen if you mix those acid and alkali? That's an experiment. The result is the experience. You get married. It's an experiment. The result is a baby. That is the experience. Okay? So, being born and taking a physical body is an experiment. And your whole life in this physical body is an experience. Okay. I am seeing you. I am answering your question. It's an experiment. And it's an experience. Is it not an experience? Yes, sir. You are interviewing me. Yes, sir. Coming to Leh Ladakh is an experiment. And we are experiencing this Leh Ladakh. Okay. So you undertake an experiment and you experience something out of it. Everything is an experiment. You are seeing a movie or you are having an ice cream. You put that ice cream in your mouth, there is an experience. Contemplating putting an ice cream in your mouth is an experiment. When you put that ice cream in your mouth, you have an experience. Okay. So everything is experiment, and an experience comes out of every experiment. Okay. I want to meet you. Experiment. Then I don't like you. Okay. Anything may happen, no? Like or dislike happens. Okay. Like is an experience, dislike is also an experience. Okay. Invariably, every experiment gives some experience. And what happens after experience? You say you express, ice cream is good or ice cream is bad. Okay. The interview was hopeless. What kind of a stupid question you put? Okay, a very great question you put. And what kind of a stupid answer I gave? No, I gave a very great answer. After we experience, we express it. It is very satisfying for me
to have an interview with you. Oh, it was hopeless. I will never repeat any interview with you. So we express our whatever we want to express. Expression should be there. Some people suppress their expressions. They'll end with the experience. No. After experience, you must express it. Expression is important. Experiment, experience, expression. Your expression gives you evolution. If you suppress it, if you don't speak about it, if you don't think about it, if you don't give expression to your experience, you will not take the next step of evolution. That's why in our meditation sessions, after the meditation, you say hey, express your experience. What happened to you? No, I have seen some colors. No, I have not seen anything. It was very dull and boring. That was, you have expressed your experience. It was dull and boring. I will never do meditation again. Well, you have expressed yourself. That expression is very important. No, I will do it again. It was so very wonderful. Okay. Tomorrow, will you teach me again? Will you make me do meditation again? So you have expressed. Whenever you express, you take a level in evolution. You take the next step in evolution. That's why in the Pyramid Spiritual Society movement, we want everybody to express. I give mic to everybody. Come, express. Whatever may be, express. Expression is very important. People suppress themselves. They don't interact, they don't react, they don't act. They're afraid to act, they're afraid to react, they are afraid to interact. Why should you be afraid? The first point in spirituality is fearlessness. Fearlessness means you must express. Okay, you may not dislike me, you may not like me, but express your dislike to me. I'll be happy for it. Isn't it? So expression is very important in Pyramid Spiritual Society. Experiment is very important. We ask everybody to experiment. You have never done any meditation, come experiment with meditation. You ask me, why should I do meditation? It's an experiment here. Okay? It's an experiment. Why don't you go for a new experiment? You will have a new experience. And after that meditation, what was your experience? You express. When you express, I know you. When I express, you know me. When I don't listen to your expression, how can I know you? When you don't listen to my expression, how can you know me? When we express ourselves, we give an opportunity for everybody to understand us. And when we listen to others' experiences, expressions, we understand them. We need to understand each other, isn't it? One human being has to understand the other human being, isn't it? So they have to express, and we have to listen to others' experiences, others' expressions. Then what happens? Both the expressor and the listener, they get one more level in evolution. When they listen to your third experience, your expression, oh, I climbed one level in evolution. So, oh, this is what happens when she meditated, she got this experience, and it's very beautiful to her according to her own expression. Okay, so meditation is good for some people. That understanding comes to me. It may not be good for everybody. Okay, for example, in meditation, I put some music, or I play the flute. Okay, then I ask for their expressions. Some people say, Swamiji, your flute disturbed me. Never play your flute again. But 99% of people have expressed that your flute was very beautiful for me. It helped us in meditation. So 99% people expressed that the flute, the music helped them in the meditation, and 1% people certainly expressed that it was disturbing to them. So it gives me some data to go to take the next step. If one person was distracted, if 99% were attracted to meditation, I will go by the 99%. If had 99% people said that it was all distracting, I would have never played my flute again.
So I go by your expressions. It helps me. So experiment, experience, expression, evolution. Without expression, there is no evolution. Understand? When you put a question to me, when I answer, I am listening to my own answer also. I am also listening to my own expression. Okay, when I am playing a flute, okay, some raga I am playing. I am also hearing to my own playing. My expression in my flute, I am also listening. So, okay, it was very beautiful gamakam I played, or it was not so very good. So I get an evolution. I know my failings, I know my successes. I know where I am an expert, I am where I am not an expert yet. So we will all understand about ourselves. Every understanding gives a jump in evolution. Okay. When you express yourself, I understand it. When I listen to my own expression, I again understand it. Every understanding gives you an evolution. So first E is experiment. The second E is experience. The third E is expression. The fourth is evolution. Okay. And every evolution, every level of evolution has got a corresponding level of enjoyment. Okay. When I listen to music, there is one enjoyment. When I play music, there is another level of enjoyment. Isn't it? So, when your mind was distracted in meditation, you could have had a lot of thoughts. You didn't enjoy. But when there were no thoughts, you did enjoy much. The bliss was there. The so-called Brahmananda is there. So, when you reach an experience, an evolution, an understanding, there is a corresponding jack up in enjoyment. Enjoyment is the purpose of life. For that you need to be evolved. For that you need to express based upon your experience, for which you need to do experiment. Okay. The first is experiment is very important. You must make or do or involve yourself in as many experiments as possible. Okay. If you are lazy, you will not do experiments. Okay. Why we should do tomorrow? Let us have this interview tomorrow, day after tomorrow. Okay, why should we meditate now? Tomorrow we will do meditation. Next lifetime we will do meditation. So you are postponing your experiment. Then you are postponing your experience. Okay. Then you are postponing an opportunity for you to express your experience. You are postponing your evolution. Okay. Enlightenment. Okay. So remember this point. Experiment, experience, expression, enlightenment, and evolution. Enlightenment is a fresh understanding. What is enlightenment? Enlightenment is a fresh understanding. A new understanding is enlightenment. Light means you see things. In the darkness you don't see things. Some dog is there. You don't know what kind of dog. When you put a torch, then you have light put away. Oh, this is my own dog. Or it's a stray dog. Okay, it's a puppy. It's a male, it's a female. I will understanding it. So enlightenment means every understanding gives you enlightenment. Every enlightenment gives you a level in evolution. So what is the first E? Experiment. Yes, but second E? Experience. Third E? Expression. Fourth E? Enlightenment and evolution. Fifth E? Evolution. Enjoyment. Fifth E? Evolution. Sixth E is enjoyment. Oh, the 6 E's. Okay. Okay. Evolution, enjoyment. Without enlightenment, there is no evolution. Enlightenment, every small understanding is an enlightenment. Every big understanding is an enlightenment. Enlightenment need not necessarily be very big things. Very small things are enlightenment. Okay? For example, your mom prepares some pachadi. Okay. When I understand how she prepares, when I see her, when I put her that, I can also do that, I am enlightened how to prepare the pachadi. Have you tasted pachadi? Yes, sir. Yes, sir. We want that pachadi India. We want pachadi Bharat. We'll make it, sir. Through our channel, we will make it. Through our channel, Yes, sir. we'll make pachadi Bharat. Yes. Pachadi world. Pachadi world. Like Jena Jagat. Pachadi Jagat.
Yes. Okay, Buddha that's foods everywhere. Huh? Buddha food everywhere. Experiment you have with Patriji. Yes, sir. Many people don't know what is Patriji. Okay? We'll start with that, sir. What is Patriji? Patriji is not a chutney. Patriji is a very beautiful presentation, mostly present in Andhra Pradesh or South India. Okay? You mix it with rice. Okay? And make rice and Patriji combination and put a lot of ghee in it. Okay, then you will taste heaven in your mouth. That is Patriji. I can't describe it in words, stupid lady. Okay, you have to eat it. You have to experience it Experience it, Patriji. first to completely enjoy it. Okay? We want Patriji Jagat, Patriji Bharat, Patriji North India. We will start with that Okay? So, experiment. experiment. Okay? That is the first point. Yes, sir. Okay? Whatever you have never eaten so far, you must eat now. Excepting a pasta. I don't like pasta. We will touch upon that, sir. Yes. Okay? Experiment. Experiment. Experience. Then you must express it. You know. Then comes enlightenment. Then comes evolution. Then comes enjoyment. Enjoyment. And remember, all these points are for eternity. That is the eighth, seventh E. E for eternity. Everything is eternity. Experiments are for eternity. Experience are for eternity. Expression must be for eternity. Enlightenment is for eternity. You are always going on getting enlightened. Okay. And evolution is for eternity. There is no end for eternity. There is no end for enjoyment. The final E is eternity. We live in eternity. Okay. Enlightenment is forever. Experience is forever. Expression must be forever. Enlightenment is forever. Evolution is forever. Enjoyment is forever. And eternity is forever. Another name for forever is eternity. So, how many E's? Seven E's. 7 E's. Okay? Yes, sir. Well, this is the PSSM philosophy. PSSM philosophy believes in experiments. Okay. Without experiments, we don't talk to each other. Okay. Our life is full of experiments. Okay. With pyramid meditation, without pyramid meditation, what is the result? With music meditation, without music meditation. With meditation, without meditation, life, what is the result? Okay. Yes. With expression, without expression, what is the result? We go by all these scientific methods. Okay. And we take a number of readings. Statistical samples should be there to come to a conclusion. Isn't it? A number of times you must do experiment to come to a statistically significant conclusion. Right? Yes? Sir. So a number of times I play, every time I record your expression, whether it's good or bad. Okay. Over a number of 100 readings, I can come to a reasonable scientific conclusion. Not with one experience or one experiment. Can you come to a scientific conclusion? We need a number of statistical samples, significant statistical samples. So I applied all these principles of statistics in my life. I did conduct many experiments and I have come out with many experiences, many expressions, collected expressions of everybody. And I have got a lot of enlightenment through every collection of my expression of others. And then I got a lot of evolution and got a lot of enjoyment. And I'm happy. This is for eternity. Yes. Okay, let us take one more example. There are people who are eating meat. Yes? Yes, sir. How many? Many, many, many. Billions. Okay. So we ask those meat eaters, why don't you conduct an experiment? For 1 week, stop eating meat and see what happens. What would be your experience? Conduct an experiment. Okay. Have a new game. Let us see what comes out of it. Okay. He said, okay, Baba, if you are saying so, I will do that experiment.
So for 1 week, he stops eating meat. Then I go to him and ask him, what was your experience? It was horrible, I was missing my meat. Okay, I will never talk to you again. I will never fall into your trap. So he goes back to meat eating. It's okay. He has expressed that he didn't like that experiment. He wanted that meat badly. Okay. Another person, the same experiment. He says, it was very good. I felt very light. For the first time, I felt some life in my body, my mind. Thank you for giving me that experiment, that suggestion of not eating meat for 1 week. Okay. Now I have decided to leave meat forever. So I have collected many such examples. I listened to their expressions, expression of their experience. I gave them experiments. So I heard lakhs of people doing that experiment and finding that they were very happy when they left red meat. Okay. But they said, I want at least chicken. Red meat is okay, bad. I left it, but I want chicken. Then some people say, can I take fish? At least they left something. And finally people said, no meat at all, no chicken, no fish, not even egg. I am very happy. So I give this experiment to everybody. Why don't you try? If you don't like it, okay, go back to your red meat. Okay, and reap the hell, who cares? Okay, but there is a choice here. Okay, you see what it is, experiment with vegetarian food, with no meat food, with no chicken food, with no fish food, with no egg food, and see what it is. And large number of samples collected all over the world, we have come to a conclusion that vegetarian is the best for everybody. Okay, they may not like it or they may like it, but the truth is truth. Truth comes out of large-scale experimentation. Truth comes out of large-scale experimentation. So we have come out with the truth that everybody should become a vegetarian. Okay. Even in vegetarian food, there are many types of vegetarian foods. Don't go with garlic, we say. Okay. No, garlic is vegetarian. Okay, it's vegetarian, it is not good. Okay. In America, we find people putting sambar in fridge and next year they eat that sambar. It's very wrong. Okay? So that's wrong. Don't put something, the cooked foods in the deep fridge and eat next year. They don't have any time for cooking every day. Very stupid people are there in America. Okay, and don't put in my oven, what is that called as? Microwave. Okay, instant heating, at high voltage. It kills all the energy in the food. No microwave. So eat with microwave, eat without microwave. You see the difference. Eat fresh food and eat after 1 year of deep fridge in the same sambar. Okay. I'll give you one example of Mahatma Gandhi. He was in Erawada jail, Pune. Okay. For 2.5 years he was in the jail. One day what happened? Mahatma Gandhi, after eating the chapati and aloo sabji, he got vomitings. Every day it was okay, but one day he got vomitings. He was very upset. Then he called, who cooked this potato curry and chapati? You call that fellow. They called that one fellow. Did you cook for me today? Yes, Swamiji, I cooked for you today. Do you daily cook for me? No, Swamiji. Only today I cooked. Why? The regular cook took a leave. So there was nobody to cook. So one of the inmates, one of the murderers, was undergoing punishment in the jail. He was asked to cook. So he cooked. So his hand was full of negative energy. So that negative energy went into Mahatma Gandhi's
body. Even such a positive man, he couldn't bear that negative energy. So there were vomitings. See, who prepares that vegetable food is important. Mahatma Gandhi was such a positive body, he cannot bear a roti, a vegetarian food, cooked by a non-vegetarian fellow. Understand? So you got vomitings. Who cooks is very important. No non-meditator should cook. Only meditators should cook. And even meditators, the most powerful meditator only should cook. If he has got the time. Okay, that's why I cook most of the time. Okay. Otherwise, if great masters are there, I will let them. If there are no people, I will cook. Because I have to cook. It's my duty to cook. Understand? So, everything is based upon experiments. Knowledge comes out of experiments. Enlightenment comes out of experiments. Experiment, experience, express, then enlightenment. Evolution. Okay. So, you eat the same chapati, same aloo sabji, vegetarian food, out of a person who is a murderer, you don't have enjoyment, you have vomitings. You eat out of a great meditator, you'll have a lot of enjoyment. Okay. So, after a lot of experimentation, after a lot of experiences, after a lot of collection of everybody's expressions, which is collecting the data, okay, then you analyze the data, you come out with a conclusion, a truth, a light. Okay, that's what is enlightenment. About food, about speech, about meditation, about music, about pyramid. Every experimentation about everything. Okay. What happens when you teach meditation as an experiment? You teach others. For example, you do 10 hours of meditation. You get some energy. The same energy you will get if you teach meditation to 10 people for half an hour. Instead of doing meditation for 10 hours, if you teach meditation for half an hour to 10 people, you will get the same amount of energy. That's why those people who teach meditation, they don't have to do meditation. I don't do meditation. Because I get the same energy when I speak about enlightenment, when I speak about meditation, when I teach meditation, I get a lot of energy. So all these facts, I have another in my life. Out of experimentation, scientific method, I'm a scientist. Everything I experiment, collect a lot of data of everybody's experiences. I ask everybody, what happened to you? You express yourself. So I collect those expressions. I analyze them and come out with some enlightenment. Okay. So that helps in the evolution of every person. They enjoy more their life. Otherwise, they will calling it life as miserable. Dukkhalaya. This world is dukkhalaya. No. Depends upon you. Okay, you do a wrong thing, it becomes wrong, the world becomes wrong for you. You do a right thing, the world becomes right for you. You enjoy everything. PSSM is the whole basis of PSSM is experimentation of one person. What do you say? Yes, sir. We ask everybody to do experimentation. Don't believe because I said so. Do experimentation, collect your own results, be a scientist, be a statistician. After a number of experiments, automatically you will come to some conclusions. Then when you come to some conclusion, you automatically will leave those conclusions. You will be a better person, more evolved person. That Gandhiji's example is very classic, isn't it? Who prepares the food? That's very important. Not only what you should eat. Okay. After
whose hands is the cooking done? Understand? Experimentation, experience, expression. Expression is the block. Nobody expresses. They are afraid to express. Okay. We demand expression. We insisted upon expression. You must open your mouth and tell us what is your feeling about everything. Okay. And out of those experiences comes enlightenment. Okay. There are degrees and degrees of enlightenment in each and every field. Okay. How you dress is an experiment. With some dresses you feel tight, some dresses you feel very light, very easygoing. Okay. Which colors are important? Dress. How do you serve your food is important. How you speak is important. How you listen is important. Everything is an experiment. And everything can be enlightening. Can give you more evolution. Okay. Where you should not speak, you should not speak. Where you have to speak, you have to speak. How much you have to speak, you must speak only that much. Okay. Everything is science, based upon the results of experiments. Suppose you are going on talking blah blah, I will never talk to you again because I had a very bad experience with you. Huh? Blah blah. Blah blah. Okay. What's your name, by the way? My name is Alekhya, sir. So I'll never speak to Alekhya again. Okay? Otherwise, we'll say, oh, she's such a great person. I would love to talk to her. Can you talk again, ma'am? Tomorrow we can have one more interview Definitely. on another topic. Yes, thank you, ma'am. Thank you, Elizabeth, ma'am. Bandana, are you ready? आप ready हैं? हाँ जी सर। एलिजाबेथ में हो गया। अब बंदना जी बोलेंगे लाइव बोल। जस्ट Am I audible, sir? हाँ, you are audible. Yes. हाँ, अब आप बोलिए। Thank you. Yes. Start. आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज टॉपिक दिया गया है हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पत्रीजी के 7E कंसेप्ट को, तो उनको पहले मेरे हृदय से प्रणाम करना चाहती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है मास्टर्स, जो कि मैं हरीश भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू हरीश भाई, इतना सुंदर कंसेप्ट मुझे देने के लिए। ये बहुत ही एक 7E कंसेप्ट का है मास्टर्स। माइक थोड़ा पास कर लीजिए मास्टर। ओके, सुनाई नहीं पड़ रहा? अभी ठीक है? यस यस। ओके। ये 7E कंसेप्ट जो है, ये PSSM का, जो कि हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का ये फिलोसफी है, जो कि बहुत सुंदर सा एक एक्सपेरिमेंट है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं।
जो कि ये 7E जो है ना, हमारे जिंदगी में ये अप्लाई सभी ने करना चाहिए। तो बहुत कुछ हम इससे जान पाते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है जिंदगी के हर एक मोड में। हम ये 7E को कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। तो अ, उसको मैं बोलना चाहूंगी। पहला जो ई है 7E के अंदर से, पहला ई जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, और दूसरा ई है एक्सपीरियंस। अभी फिलहाल अभी दो दो 7E के बारे में हम बात करेंगे। तो मास्टर्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो भी हम कुछ करते हैं ना, हम उसको एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोते हैं ना, सॉरी मास्टर, तो सोना भी एक एक्सपेरिमेंट है। हम जब सोते हैं, हमें तबीयत अच्छा नहीं लगता है, तो चलो चलिए सो लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोने से शायद अच्छा लगे। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो जब सो जाते हैं, इसके बाद जो है हम अच्छा फील करने लगते हैं, इसके बाद उठने के बाद। तो जो ये अच्छा फील करते हैं ना, ये ही एक्सपीरियंस है। और ज्यादा बोलने के लिए मैं बोलूंगी, जैसे कि हम पृथ्वी पृष्ठ में जन्म लेते हैं, ये जन्म लेना यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है। आत्मा को क्या चाहिए? नया नया चीज एक्सपीरियंस चाहिए कि क्या होता है, बहुत सारे सीख उसको चाहिए। तो जो जो हमारे साथ होता है यहाँ पर जन्म लेना एक एक्सपेरिमेंट है। हम जो भी इस पृथ्वी पृष्ठ में हम सीखते हैं ना, ये हमारा एक्सपीरियंस है। अगर हम चूज ही नहीं करेंगे या हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो हम कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, हम सीखेंगे ही नहीं कुछ, है ना। तो जैसे कि और एक एग्जांपल दूंगी तो मैं, जैसे ध्यान करना, ठीक है। तो चलो हम ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करना ही ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो चलो देखते हैं क्या होता है रे ध्यान में ना कुछ, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या होता है ध्यान में। तो हम, कोई बोलता है ना, मुझे बहुत सारे थॉट आता है, ये अच्छा नहीं लगता है यार, ये ध्यान मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपेरिमेंट के बाद जो आता है एक्सपीरियंस, ये अच्छा हो सकता है, अच्छा भी नहीं हो सकता है, लाइक और डिसलाइक होता है। जैसे कि हम मेडिटेशन कोई करता है, चल यार एक्सपेरिमेंट तो एक कर, एक ध्यान तो कर, कैसा लगता है तो देख, ये बहुत अच्छा लगता है तो करके तो देख, चल यार करते हैं। तो किसको बोलता है नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्या क्या सोच आ रहा है यार, न जाने 1000 थॉट आ गए इसके अंदर, मेरा तो माइंड जाम हो गया। कोई बोलता है नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे मेरा लगा कि मेरा बॉडी लाइट हो गया, मैं बहुत लाइट फील करी, मुझे काम महसूस हुआ, मैं शांत महसूस करने लगी अपने आप में, मुझे अच्छा लगा, मेरा मन शांत हो गया, आई फील कूल, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं चख सकते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ध्यान का जो मजा है ना, वो चख नहीं सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पत्रीजी, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, शादी करना। शादी करना भी एक एक्सपेरिमेंट है। शादी करने के बाद क्या होता है? बच्चा होता है। तो वो एक एक्सपीरियंस है। हाँ। तो जब हम ध्यान करते हैं, कोई के ध्यान करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब वो बहुत से थॉट आते हैं, उसको मजा नहीं आता है, तो बोला मना कर देता है, स्टडी यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे मेडिटेशन में। उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वो बोला तो सही कि अच्छा नहीं लगता है। एक्सपेरिमेंट तो किया बैठ के कि क्या लगता है। तो एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस होगा। अच्छा भी हो सकता है, गलत भी, अच्छा भी नहीं हो सकता है। तो किसी को कोई के बोले अरे यार
बहुत सारे ना, और एक बार ध्यान करने के बाद वो से थॉट आते ना, आते थे, अभी चला गया, अभी मैं जीरो स्टेट ऑफ माइंड में आ गई। वो परमानंद को अनुभव किया, वो वो आनंद को महसूस किया, वो अमृत को महसूस किया ध्यान में। तो वो क्या हुआ, उसको एक्सपीरियंस हुआ। तो सेकेंड ही जो है ना, हमारा एक्सपीरियंस है। और जब तक तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, पहला ई जो नहीं करता, जो कि एक्सपेरिमेंट है, अगर ध्यान में नहीं बैठता तो एक्सपीरियंस ही नहीं होता है ना। तो उसको कोई किसी को कलर्स दिखते हैं, किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो कि हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें आता है। तो एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंट, पत्रिजी भी बोलते हैं। जैसे कि मुझे ये याद आया, पत्रिजी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रहे थे, तो मुझे ये लगा जब हम सोरो गए थे, तो सोरो जाना, बालेश्वर में सोरो जाना और ध्यान महायज्ञ होना हमारा एक एक्सपेरिमेंट था। क्या होगा, चलो देखते हैं। पत्री जी बोले हर जगह ध्यान करना चाहिए, हर जगह ध्यान को प्रचार करना चाहिए। चलो सोरो में करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, कितने लोग आते हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं होगा, ये स्वर्ग का दुनिया, ध्यान जगत क्यों नहीं होगा। हम सोरो में एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपीरियंस क्या हुआ हमारा, सोरो जाने के बाद, ध्यान प्रचार करने के बाद जो वो परमानंद फील किए, वो है हमारा एक्सपीरियंस, जो बहुत अच्छा लगा हमें। अगर हम सोरो नहीं जाते, प्रचार नहीं करते, तो हम क्या ये अच्छा एक्सपीरियंस कर पाते, है ना। तो तो जो भी हम लोग करते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट होता है, और उसके बाद जो है हमें एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस कम आउट विथ एवरी एक्सपेरिमेंट है। एक कोई बोल रहा है, मैं किसी को ना मैं मीट करना चाहती हूँ, उसको मिलने के बाद ना बहुत अच्छा लगा, जैसे कि पत्री जी को किसी से मिलने अच्छा लगा, फिर फिर उनको अच्छा नहीं लगा, ये भी हो सकता है, ये लाइक भी हो सकता है, डिसलाइक भी हो सकता है। एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे कि एक्सपीरियंस के बाद जो बोल रही थी, मेडिटेशन हुआ, मेडिटेशन के बाद कलर्स दिखे, तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो है थर्ड ई है। पहला ही है एक्सपेरिमेंट, इसके बाद है एक्सपीरियंस, जो ध्यान में बैठने के बाद एक्सपीरियंस होता है, कलर्स दिखते हैं, लाइट फील करते हैं, हाँ, काम फील करते हैं। उसके बाद क्या बोला जाता है हम लोगों को, ओ है थाड़ी, क्या है मास्टर्स, ओ है एक्सप्रेस। जिसे पत्री जी बोलते हैं, हर किसी को ध्यान करने के बाद अपना जो क्या वो एक्सपीरियंस किए उसको एक्सप्रेस करना है। क्या ध्यान में हम देखे, हमें अच्छा लगा या ना लगा, भले अच्छा लगे या ना लगे, कुछ भी हो, मगर उसको हम एक्सप्रेस करना चाहिए। जिसे पत्री जी बोले किसी को, अरे यार ध्यान कर, चलो यार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी को बोलते हैं तो क्या कर रही है यार, चल मैं तो उड़िया में बोलना चाहिए, चलो सॉरी। तो क्या हुआ, तो आमे कौन କରିବା କଥା ମାଷ୍ଟର୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଦ ଆସିଗଲା ମତେ, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି, ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ରେ, କି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତୁ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନା କରନା, ଗୋଟେ ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ, କେତେ ମଜା ଲାଗିବ ତୁ ଜାଣିବୁ। ନା କଣ କରିବି, ତୁ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖ, ସପ୍ତାହ ଛାଡିଦେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖ। ତ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତାକୁ କଣ ଫିଲ୍ ହବ, ତାକୁ ଭଲ ବି ଫିଲ୍ ହେଇପାରେ, ଖରାପ ବି ଫିଲ୍ ହେଇପାରେ, ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ କିଛି ହବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା କଥା। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ,
जदि मो ध्यान रे कौन देखिली मते भल लागिलानी कि भल लागिला जेते पर्यंत मु कहबिनी सामना लोक केमती जानिबो कि मते एटा भल लागिलानी कि भल लागिला कि भय रे हमें बहुत जण कौन करती भय रे कहंतिनी तो पत्रिजी कहउछन्ती भयर कौन कारण ही नहीं एठी आमको आम भीतर जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करिया कथा हमर भीतर एक्सपीरियंस टा ताले हमको आगु को जो स्टेप गुड़ा अच्छी जो डेवलपमेंट अच्छी जो ग्रोथ अच्छी से सब जिनस आम सहित हो पारिबो जेते पर्यंत आमे साहस करके गोटे पाद आगु को जीवानी सेते पर्यंत सामना लोक ना जानी पारिबो ना आम भीतर क्लारिटी आसी पारिबो ना हमर ग्रोथ आसीबो तो बत्रीजी कहउछन्ती ध्यान करूछन्ती एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना तांका एक्सपीरियंस को डरुचन्ती स्पिरिचुअलिटी रो प्रथम कथा होची फियरलेसनेस भय करिवा नै काकू भय करियो यदि मु गोटे प्रकाश सामना वाला यदि प्रकाश वो परम ब्रह्मंकर अंश मु काकू डरिवी यदि सी अछि है ना मास्टर्स तो जहा जदि मु देखिली भलो बा खराब मते से कोन जने सामना लोकटे कहला अरे भाई पता जी एते सारा एक्सपेरिमेंट करिचंदी ना बिकॉज ऑफ दैट ही इज ए गॉड सेति पई समस्तिंकर प्रिय रही पाचंदी ब्रह्मश्री ही पाचंदी पितामह से पिता श्रेष्ठ ही पाचंदी जिंदगी भर से एक्सपेरिमेंट करचंदी मास्टर्स आ लाइफ रे समस्त एक्सपेरिमेंट करिया देन लाइफ रे बहुत जो जिनस अच्छी ग्रोथ अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन जो अच्छी से सब जिनस हम सहित हो पारिबो तो पत्रीजी कौन कले एक फ्लूट बजेले फ्लूट बजेले से देखले जन पचारे अरे फ्लूट केमती लगुच मेडिटेशन तेणु बजाऊँ जड़े कहले ए मत जमा भल लगुनि तुम मेडिटेशन ने मो तुम फ्लूट बजाटा मोर मोर ध्यान भटकी दउथला मते भारी डिस्टर्ब करथला आ तमे बजाओनी मते से कहले अच्छा ठीक अछि he is a person he takes everything very positively masters then आउ जण को पचारे अरे भाई केमती लागला अरे भाई सर आपण जतले बजाउतले मेडिटेशन रे फ्लूट टा मते एते शांति लागला मु बहुत कनेक्ट हे पाली मेडिटेशन रे मु निजको काम फील कर पाली मु कूल हे पाली मु निजको शांत कर पाली मेडिटेशन रे से ता से लिंक हवा पई मते बहुत इजी हला कनेक्ट हवा पई मेडिटेशन बहुत बढ़िया लागला तार कहले ओ ठीक अछि आउ जण पचारी सेंती पचारी पचारी 100 200 300 केते जणू से पचारते तापरे पचारी पचारी 99% लोक तो जानिले जे फ्लूट बजाइले मेडिटेशन रे बहुत बढ़िया रे कनेक्ट ही पड़छन मेडिटेशन तांकर मेडिटेशन बहुत भलो ही पड़छ बहुत भलो एक्सपीरियंस होछ तो से जणे कहितबा नेगेटिव बा जो तांको भलो लागिलानी ते तांको सहित सेही डाटा सहित जीवे नाही से जो डाटा जो कलेक्ट ले जणो भलो लागि नथला तांको से डाटा सहित से जीवेनी से कहा सहित जीवे 99% लोकंको सहित से गले जदि 99% पॉजिटिव न कहि कि नेगेटिव कहि थांते पत्रीजी को कोन पत्रीजी आ फ्लूट बजै थाने कि ना मास्टर्स पत्रीजी कहउछन मु के फ्लूट बजै ना थाले तापर जदि 99% तांकर कारण तांकर गोटे अंडरस्टैंडिंग हेगला दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट एक्सप्रेशन पर गोटे फोर्थ आसे मास्टर्स एनलाइटमेंट गोटे अंडरस्टैंड एवरी अंडरस्टैंडिंग इज ए एनलाइटमेंट गोटे अंडरस्टैंडिंग आसीगला कि अरे ना ये जणे कहला भल लागुची आउ जणे कहला भल लागुची आउ जणे कहला भल लागुची ना ता माने फ्लूट बजाटा बहुत भल लागुची बहुत सारा केते गुडे गोटे गोटे एक्सपेरिमेंट से चला परे ध्यान रे बसला आज बहुत बढ़िया लागला आउ दिन बसिया देला देखिया आज भल लागला आउ दिन देखिया दिन बढ़िया लागुची तापर दिन बढ़िया लागुची ता माने आमे जानुचे गोटे गोटे हमर एनलाइटमेंट होची आमे गोटे अंडरस्टैंडिंग पाउचे गोटे डाटा हमको मिलुची कि आमे ए ध्यानटा हमको बढ़िया लागुची
आमको किसी गोटे आम सहित काम करुछि आम बॉडी रे हमको बहुत काम फील करोछ मन पूरा शांत हो जाउछ जोटा कि ए दुनिया रे हेई पारेनी ए बिजी लाइफ रे हमको आम मन शांत रही पारेनी मास्टर्स तो जदि आमे एक्सपेरिमेंट करन तांते ध्यान रे बसी न तांते से एक्सपीरियंस करन तांते करी 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 60,000 जो आमर अछि थॉट आसे 1 आवर रे 50,000 40,000 10,000 हाँ 500 10 0 से जो टाइमिंग पीरियड तो सेटा एनलाइटमेंट रु इवोल्यूशन को ट्रांसफर कराए मास्टर्स तो प्रथम जदि आमर ई हुए दैट इज एक्सपेरिमेंट देन सेकंड इज एक्सपीरियंस मास्टर्स ध्यान कला परे जो एक्सपीरियंस होची से होची एक्सपीरियंस थर्ड ई होची एक्सप्रेस करिवा ध्यान रे हमें कोन देखिले ताको हमें एक्सप्रेस करिवा भलो हो बा मंद हो हमर भय को छाड़ी कि हमें ताको एक्सप्रेस करिया बहुत दरकार मास्टर्स पात्रीजी कहउचंती देन फोर्थ ई इज गोटे अंडरस्टैंडिंग मिले आम गोटे डाटा मिले आम गोटे क्लारिटी मिले दैट इज एनलाइटेंड हो आमे एनलाइटमेंट मिले हमको कि हाँ एटा भलो एटा खराब एपटे गले भलो हबो एपटे गले खराब हबो गोटे एनलाइटमेंट मिले आउ ताको बार 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 हमें कल्ला परे जेमति पात्रीजी कहले 99% लोकन को टेस्ट करली माय गुडनेस सो मीनिंगफुल ही हैज he experimented large person बहुत सारा लोगों को नेकी से डाटा कलेक्ट करचंदी he is a great scientist masters he himself is a science my goodness से बहुत एक्सपेरिमेंट करिचंती तांको जिंदगी रे और से प्रतिटी लोक को ध्यान रे हला परे से कहंती माई के प्रतिटी लोक को दियन आज्ञा ध्यान कले केमिति लागला एक्सप्रेस करो एक्सप्रेस करो कौन एक्सपीरियंस कले आपण सेटा एक्सप्रेस करंतो आउ भय को छाड़ी की कौन ताले हमर एनलाइटमेंट हबो एनलाइटमेंट परे हमें बार 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 जेतबेले हमें एक्सप्रेशन हमें एक्सप्रेस करिबा करिबा हमर बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हबो तापरे हमर एनलाइटमेंट परे हमर इवोल्यूशन हबो हमर ग्रोथ आसी जीवो मास्टर्स वी विल राइज देयर हां तो हमको इतरे कौन करा जाए स्पिरिचुअल सोसाइटी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट रे हमको कहा जाए कि प्रत्येक लोगों को एक्सप्रेस करो देन मास्टर्स एनलाइटमेंट परे फर्स्ट कला एनलाइट एक्सपेरिमेंट देन एक्सपीरियंस देन एक्सप्रेशन देन एनलाइटमेंट देन इज इवोल्यूशन जेतबेले आपण बहुत सारा डाटा कलेक्ट करिवे अंडरस्टैंडिंग हे जेबो गोटे क्लैरिटी आस जेबो एलाइनमेंट परे आपणकर लार्ज स्केल रे जेतबेले गोटे ग्रोथ आस जेबो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन मास्टर्स हां समस्ते मास्टर्स पत्रीजी कहउचंदी समस्ते हमें एक्सपेरिमेंट करबा कथा जो माने मेडिटेशन करूना तांको हमें कहबा कथा मास्टर गोटे किछि टिके गोटे एक्सपेरिमेंट करी देखो कोन ना किछि नहले गोटे आपण मेडिटेशन करी देखो गोटे एक्सपेरिमेंट कोन एक्सपेरिमेंट करिवि मेडिटेशन करी देखो केमिति लागुची आपण देखो तो से सेतरु तांकर किछि गोटे एक्सपीरियंस हो भलो हो बा मंद हो तापरे हमें तांकर एक्सप्रेशन को जानिबा तापरे से गोटे अंडरस्टैंडिंग आसीबा एनलाइटमेंट हबो देन इवोल्यूशन हबो पत्रीजी तांकर लाइफ को पूरा छे तांकर लाइफ रे जदी एते सारा एक्सपेरिमेंट करना थाने मास्टर्स आज आमे ए जागा रे न थांते समस्ते से लाइफ रे एते सारा एक्सपेरिमेंट करची करिचंती जोतरे हमको क्लैरिटी मिलची जहा द्वारा तांकर टॉपिक को नेकी आमे भी टीचिंग दोचे समस्ते जानूचे धर एबे भी जदी मैं एग्जांपल ले भी हैरिस भाई आम सहित अछंती से चाहती केमती ग्रुप रो समस्ते जे कि पत्रीजी को सहित मीट भी करिया को सौभाग्य पाइनाती पत्रीजी प्रतिटी
ज्ञान को समस्ते पाती एमती गोटे सेना गढ़ा जो पत्रिजी समस्त टीचिंग से जीवन काल जी शिक्षा एत सारा एक्सपेरिमेंट कर मास्टर्स आमे डेवलप हेबाई आमर इवोल्यूशन आसियापाई आमर ग्रोथ हेबाई तो सी कहते आम पाखे समस्त कहीं हरीश भाई एत सारा कर कारण कौन कि पत्रिजी ज्ञान को समस्ते पाई पारती समस्त इवोल्यूशन हो समस्त गोटे डेवलपमेंट हो तो सी गोटे 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 टॉपिक को जिते से कहते मास्टर्स तांकर एक्सप्रेशन देखिए आपण एमती रही जाने कितने सुंदर से कहूँ जो मेडिटेशन करला भावुँ अरे वाह कितने बढ़िया मेडिटेशन करुचे आपणकर निजर जो ध्यान करांती से कथा भी भावुवे अरे यही ध्यान टा ना एत सुंदर अच्छी सी जो ध्यान कला ना से ध्यान टा ना बहुत बढ़िया थिला हरीश भाई से दिन जो ध्यान जो कंसेप्ट जो क्लैरिटी से तो बुझेली ना ओफ दैट वाज वंडरफुल तो आमर कौन होची मास्टर क्लैरिटी मिलू आमको ज्ञान मिलू आमको बहुत इवोल्यूशन गोटे हो बार 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 पत्रिजी जो कनसेप्ट गुड़ा जो आम से ज्ञान गुड़ा शुणा ऑब्जर्व करवा आम लाइफ रे यूटिलाइज करवा देयर विल बी ग्रेट ग्रोथ देयर विल बी ग्रेट इवोल्यूशन इन आवर लाइफ मास्टर्स हाँ तो टाइम पड़ा ओ माय गुडनेस चार्टा गला देन मास्टर्स एक्सपेरिमेंट पर इवोल्यूशन पर आसुची हमर एंजॉयमेंट आमे बहुत इवोल्यूशन ऐसे गोटे खुशी आसे कि आमे जहाँ हो प्रभु एत सारा ज्ञान को आमे प्राप्त कर पाले इन आमे समस्त को जानी परिबा इन जो 7 ई कांसेप्ट हेरिस भी दिले और एत सारा कांसेप्ट आम पर समस्त माने रखिचंदी आमे जे निजे बुझी कि अन्य मानन कहूछ केते बढ़िया लागुच समस्त को पत्रिजी ज्ञान जो आमे समस्त बांटीबा देयर विल बी ग्रेट एंजॉयमेंट मास्टर्स जो खुशी से खुशी मूल्य ना कहीं दे पारिबेनी तो तापर मास्टर्स अच्छी एंजॉयमेंट इज द पर्पस ऑफ लाइफ आमर लाइफ गोटे जमती जन महात्मा गांधी एग्जांपल से नेले देन कि महात्मा गांधी कौन कले जेल रे थिले जेल रे तांकू पुणे रे से थिले जेल रे तो तांकू सब दिन खाया दिया तांकू किछि लागेनी गोटे दिन तांकर वोमिटिंग हेगला बांती हेगला तो से कहले आज जे खाइबा बनेछि तांकू डाकी के आनो कहले की खाइबा बनेछि तांकू डाकी के ओणाला ना कौन हला आज्ञा ना तमे कौन सब दिन खाइबा बना ना आज्ञा मु बनाए ना ताले तमे कोन पे आज बनेछो ना जी बनाए से छुट्टी रे अछि आज्ञा मु पनिशमेंट खाउतली आ मते कहले छे नाही तोर आज पनिशमेंट तू आज रोसई बनेबू तो सी जो जेल रे थिला सी जने गोटे भूल काम करिछि बड़ काम गोटे बड़ प्रिजनर तो ताकू कुआ लाग जे तू रोसई करिवु से जो थॉट रे जो से रोसईटा बनेला महात्मा गांधी गोटे प्योर जने प्योर आत्मा तो से पापात्मा जो भी जो खाइबा बनेले जो थॉट रे बनेले तो से प्योर एनर्जी तांको भितरे पसी पारलानी से नेगेटिव एनर्जी से प्योर पर्सन भितरे पसी पारलानी जहा द्वारा तांकर बांती हेगला मास्टर्स तो किए बनौची इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मास्टर्स पत्रिजी कहउचंती तमे कोन करो मेडिटेटर्स शुड बी कुक तो पत्रिजी बहुत समय रे निजे रोसई करंती तो आमे सब बेले जने वेजिटेरियन लोकन को हाथ ही खाइबा कथा आउ कौन करिया कथा अधिक कुक जो माइक्रो ओवन रे रोसई करछन सब तो न्यूट्रिएंट्स सब तो विटामिन्स पळौची हाईली कुक्ड ही होची तादरे कोन अछि जे से खाउछन तो खाइबा भीतरे भी अछि खाइबा कि वेज खाओ तादरे वेजिटेबल्स खाओ वेजिटेबल को वेजिटेबल खाइबो आमे रसुण खाइबा कथा नुए सेटा भी गोटे एक्सपेरिमेंट रसुण खाइले कोन होची खाइले न खाइले कोन होची नॉन वेज खाइले कोन होची नॉन वेज न खाइले कोन होची तो एउडा सब आमे एक्सपेरिमेंट करिया कथा समस्त सिंगल सहित जो जा द्वारा हमर गोटे बहुत इवोल्यूशन हो इवोल्यूशन में बड़ा एंजॉयमेंट हो देन दैट द लास्ट वन इज इटर्निटी इटर्निटी में जो गोटे सत्य गोटे क्लैरिटी गोटे सेपरेट एंटिटी जोड़ा अनंत काल रही जाए
आ सब किछि आमे जहा पत्रिजी करि जाइचंती द लास्ट ई इज इटर्निटी मास्टर्स तो सबु करिया पछरे इटर्निटी अछि आमे सबु करिवा कले जाय कि आमे से लास्ट इटर्निटी रे पहुंची बारिबा जे पत्रिजी चाली जाय नांती से चिरंतन पई आम पाखे रहि जाइचन तांकर जो फॉर एग्जांपल जेंति कहिचन से ध्यान जगत हबो से केबेटु कहि जाइचन मचन और चिर काल पई ध्यान जगत हे कि ही रहइबो तांकर कहितबा जो बीज जो थॉट रो बीज से छाड़ी दे जाइचन जो मंजी बुणी दे जाइचंती सेटा हबा कथा ही हबो पिरामिड जगत हबो ध्यान जगत हबो अहिंसा जगत हबो से कहि दे जाइचन मास्टर्स तो से यदि एक्सपेरिमेंट करना थांते तांकर एक्सपीरियंस ही न थांता तो से आम अगर एक्सप्रेस करना थांते से एक्सप्रेस जदि न करथांते हमर गोटे अंडरस्टैंडिंग एनलाइटमेंट ही न थांता से एनलाइटमेंट न होइसले हमर गोटे ग्रेट इवोल्यूशन ही न थांता अधिक इवोल्यूशन बा भल गोटे अंडरस्टैंडिंग बा राइज बा ग्रोथ हे सला परे हमर गोटे लार्ज एन्जॉयमेंट हुए कि हमें एते सारा दिनस गोटे खुशी मिली जाए एते बड़ दिनस मिलिला बोली आ एको द्वारा एते सारा दिनस हमें सिखि परचु जानी परचु हमें समस्त ज्ञान दे परिबा पत्रिजी जो ज्ञान हमको दे जाइछन समस्त हमें बांटी बारे दैट इज ए ग्रेट एन्जॉयमेंट मास्टर्स देन द लास्ट सेवेंथ ई इज इटर्निटी मास्टर्स गोटे निजर गोटे सेपरेट ग्रोथ हे गला अनंत काल पई से रही गला चिरंतन सत्य होई तो जो जदि आमे ए सब दिनस न करिबा चिर काल पई आमे रही परिबानी से दिनसटा रही परिबानी मास्टर्स थैंक यू वेरी मच मास्टर्स मु टिके बहुत समय नै गेली सॉरी आ गोटे लास्ट रे कहबी 10 घंटा ध्यान करिया पई कहिचन पत्रिजी सॉरी 10 घंटा ध्यान कले हमको जिति शक्ति मिले मास्टर्स से कहउछन जे 10 जन को हमें ध्यान सिखेबा अध घंटा पई मोटरू हमें से 10 घंटार शक्ति को प्राप्त कर परिबा जड़े 10 घंटा ध्यान कला परे जो शक्ति मिले सी 10 जन को यदि अध घंटा लेखाय ध्यान सिखेब एकाठी ताहले हमें सही शक्ति पाई परिबा थैंक यू मास्टर्स this is all about the 7E concept of our great Brahma Pitama. Thank you, Bandana.